Numbing cream. Maybe feel slight prick, okay? अभी तो this centrifuge machine this stops cross side 30 minutes बाद start only 10 minutes this open machine plasma centrifuge and syringing filling. Enough, right? Yes. I hope it is fully numb because Yeah, it has been 45 minutes around. हाँ मतलब ज़्यादा ही हो गया है बस ये कुछ एरिया में से क्या So maybe you feel slight prickle. वो मतलब हाँ, हल्का सा ting is fine. Right, इतना ही लगेगा. हाँ. So you don't have to go to a party because थोड़ी सी redness or swelling रह सकती है which will subside in another 2-3 So on 20th I need to do makeup, not before that. Yeah. 20th is अभी तो बहुत दिन. Friday, yeah. हाँ. You can wash your face tomorrow. Tomorrow. Right? With normal water, no exfoliation. वो कब हो सकता है face wash and exfoliation? Exfoliation like after 48 to 70. Don't exfoliate yourself. Use your face wash after like tomorrow just for today and tomorrow you'll wash with normal water. Then day after tomorrow you can use your face wash. Got it. But don't over exfoliate. ठीक है? Got Scrub rub नहीं करना. Fine. Yeah. It's tolerable. So you're injecting the plasma. Yeah. It is full of growth factors. It will help in your collagen regeneration, face rejuvenation, it increase the blood supply of your face. So this redness and swelling will take around 2-3 hours and it will subside. Okay. I'm doing this jawline now. So only sunscreen and moisturizer for next 48 hours. And moisturizer is important, or it is just a thing that you're telling me if I want to? Because you may feel dry for next 1-2 days. अच्छा ठीक है. तो इसीलिए आपको लगाना पड़ सकता है. और moisturizer मेरे पास Laneige का पड़ा है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं, that's it suits you, right? Yeah. This is sunscreen application. The cream we are applying, then we'll apply sunscreen. So redness and swelling will take another 2-3 hours. Okay, sun protection is must. Okay. Don't forget that. Got it. And how often should I apply the sunscreen? Like right now you'll apply one layer, and then when? Like after 4-5 hours. Okay. No rubbing, excessive massage, just a light layer. Okay. Got it. No heavy exercise today. Got it. शाम को आए हैं बरिस्ता में, एरिया मॉल में, और यहाँ पर हम थोड़ा सा एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी है. मैं शॉपिंग सारी की सारी इंडिया की दिखाने वाली हूँ, कनाडा जाके हॉल करने वाली हूँ क्योंकि मैं हर जगह से कुछ ना कुछ छोटा मोटा ले ही जा रही हूँ. तो ये रहा लिफाफा मेरा शॉपिंग वाला. तो अब मैं दिखाऊँगी इंडिया जाके, आई मीन कनाडा जाके. कितनी सुंदर बना हुआ अंदर से. हमने पेंटिंग वगैरह अच्छी है.
मैंने कुछ शाम के स्नैक्स ऑर्डर करे हैं। तनवीर तो शायद यहीं पे डिनर करने वाला है। हेलो, क्योंकि मेरा तो मन है खान चाचा का रोल खाने का। एक्सक्यूज मी, अभी तुम्हारी हमेशा अच्छी आती है, बताओ मम्मी। नहीं, मेरे तो आँखों इस टाइम बड़ी प्रॉब्लम लग रही है मुझे। शायद मैंने ठंड लगी है, मैंने मिस्टेक कर। तो ये मम्मा का आया है मशरूम सूप विद गार्लिक स्टिक, गार्लिक ब्रेड, मोज़रेला स्टिक्स, मेरी बिल्ली मौसी के। थैंक यू। मैं 2.5 ग्लास पी गया पर वो हैवी था मम्मी। देख। हाँ, पर वो और गर्म होता ना, मजे आया। ऊपर नीचे का चक्कर है ना बानी। सारी वीडियो में आपका सेम यार। आराम से खाने भी नहीं जाएगा। कुछ वैसे मंगा लो ना। नहीं, आज का रिस्क नहीं लो, क्योंकि अभी 20 हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है।